भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है। गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। सभी को नमस्ते। वेलकम टू माय डॉक्टर्स डायलॉग सीरीज। माई सेल्फ डॉक्टर गायत्री पंडितराव। आई एम होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम पुणे। और ये संवाद श्रृंखला जो है, जिसे हम डॉक्टर्स डायलॉग कहते हैं, इसमें मैं हर फ्राइडे को अलग अलग डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एज गेस्ट स्पीकर्स बुलाती हूँ, and they come here on this platform and share their knowledge, their views, their thoughts regarding to health sector and health in general. So I'm doing these sessions in collaboration with UHO, that is Universal Health Organization. यहाँ पे वेबसाइट हम स्क्रॉल कर रहे हैं. You can just go through the website uho.org.in as well as Awaken India Movement. इनकी भी वेबसाइट यहाँ पे दी है. जिन लोगों का कभी ये सेशंस अगर लाइव मिस हुआ होगा, तो आप कृपया QY अवेकन इंडिया मूवमेंट के यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल्स पे जाके लाइव सेशन के अंडर आप प्रीवियस सेशंस देख सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारा UHO का भी चैनल था यूट्यूब का, वो ड्यू टू रीजंस टर्मिनेट हुआ बिकॉज वी टॉक अबाउट so-called topics which we are not supposed to currently. That is a very unfortunate thing. लेकिन आज हम थोड़ी रिस्क ले रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं. And today is our 24th session. आज का टॉपिक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है सभी के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए, सभी चैनल्स के लिए मैं तो कहूंगी, बिकॉज 3 सालों से जिस बात पे QY नेटवर्क या हम लोग डॉक्टर्स हु आर लाइक माइंडेड एंड दे बिलीव इन सर्टेन फैक्ट्स, हम लोग फाइट कर रहे हैं. तो इसी के एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे आज चर्चा होने वाली है. जब से मैंने ये डॉक्टर्स डायलॉग सीरीज शुरू की, आई थिंक आई वांटेड दिस such kind of session to happen. So today is the day, we should say. थोड़ा मैं आज बिफोर कॉलिंग माय गेस्ट स्पीकर, मैं थोड़ा सा टॉपिक पे जाऊंगी पहले आज, क्योंकि जो व्यूअर्स हमें आज देख रहे हैं उनको समझना चाहिए पहले कि हम किस विषय पे बात करने वाले हैं. सो टॉपिक का नाम है जीन इनसाइड इंटेल आउटसाइड. तो ये हमने ऐसा क्यों टॉपिक चुना? तो जीन यानी क्या? कॉमन पब्लिक के लिए मैं बता दूं कि जिसे हम जेनेटिक्स बोलते हैं, यानी हिंदी में वंशाणु, isn't it? तो ये अंदर है और इंटेलिजेंस, इंटेल यानी इंटेलिजेंस बाहर है. तो ये कैसे? तो इसका सिंपल उदाहरण समझने के लिए हम क्या ले सकते हैं कि अब आप अगर लैपटॉप पे, कंप्यूटर आपको मालूम है, तो इनिशियल हिस्ट्री इफ यू सी, तो कैसा था कि कंप्यूटर के जो भी कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, तो वो अलग अलग कंपनीज बना रही थी सिंगल हैंडेडली. मुझे भी, मैं टेक सेवी नहीं हूं, मुझे भी ये थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड से मुझे पूछना पड़ा कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस इंटेल वर्ड, तभी जाके मैं आपको भी एक्सप्लेन कर पा रही हूँ. तो इंटेल ने क्या किया कि ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स बन रहे थे, तो उसको अपने खुद के इंटेलिजेंस यानी बुद्धि यूज करके एक ही कंप्यूटर में इन अ चिप फॉर्मेट उन्होंने ये इंटेलिजेंस डाल दिया. एंड दिस PC became very what you say, it got campaigned कि इंटेलिजेंस हैज नाउ कम इनटू वन PC. तो इसका बैकग्राउंड लेके अब आप समझेंगे कि मैं आगे क्या एक्सप्लेन कर रही हूँ. अभी हम लोगों ने भी थोड़ा रिसर्च किया है, तो हमारी टीम से ऐसा समझ में आया है कि दिस कैन बी कोरिलेटेड विथ 2-3 साल पहले क्या हुआ. आज हम एक शब्द का इस्तेमाल
नहीं करेंगे तो मैं अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करूंगी। शायद आप सभी को मालूम होगा कि मैं किस विषय पे बात कर रही हूँ। जो हम इंजेक्शन बोलते हैं या बूटी बोलते हैं, हम ये वर्ड्स यूज करेंगे। एक ही बार मैं बताऊंगी कि ये सब चर्चा हम वैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, जैब्स के ऊपर। तो ये जो सीरीज ऑफ वैक्सीन्स जो मार्केट में आई इतने कम समय में कोविड के दरमियान, तो वो बहुत पब्लिसाइज हुई, सभी को मालूम है, इतने कम समय में। लेकिन किसी ने इसके अंदर के जीन थेरेपी के बारे में कभी ज्यादा जिक्र नहीं किया। सो व्हाट हैपेंस इज, बिफोर कोविड ऐसे बहुत सारे कंपनीज थे कि जो ये जीन थेरेपी पे काम कर रहे थे ऑलरेडी बिफोर कोविड, यानी इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कि जिसपे ये रिसर्च चालू था। लेकिन ये कोविड के दरमियान क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस प्रिवेंशन के नाम पे इन लोगों ने ये जीन थेरेपी के ऊपर काम करना बंद करके, यू कैन से दे स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज इंजेक्शंस। तो ये टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई ये इन इंजेक्शंस में यूज की गई। सो रेगुलेटर्स जो अराउंड द वर्ल्ड थे कि जो पहले ये सब प्रोटोकॉल्स को बहुत फॉलो करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं यूज करना चाहिए, यू नो, जीन्स को टेम्पर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब नॉर्म्स इन लोगों ने रिलैक्स कर दिए और फटाफट अप्रूवल दे दिया और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर एज अ प्रिवेंटिव फॉर्म डाला गया। और इसको क्या किसके अंदर डाला गया, तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, कि अभी इमरजेंसी आ गई है और इसको हमने अथॉरिटी दे दी है कि इस प्रकार के ट्रीटमेंट को हम ह्यूमंस पे यूज करेंगे। लेकिन अभी तो इमरजेंसी खत्म है, लेकिन फिर भी अप्रूवल स्टेटस अभी भी ऐसे ही जारी है। एडिशनल स्टडीज इसके ऊपर बहुत कम किया जा चुकी है, बहुत से कंट्रीज ने बहुत मैंडेट्स भी किए हैं अभी भी। सो इसलिए फाइनली हमने आज ऐसा सोचा कि ऐसे शख्स के साथ इंटरव्यू किया जाए कि जो फार्मा इनसाइडर है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से है, क्योंकि मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूं, मैंने अगर कुछ कह भी दिया तो कोई भी मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति यहाँ पे आके चर्चा करें कि जो हमें आके बताएंगी, who has been very open to discuss the science behind all this throughout the pandemic. हमारी पहचान तो ट्विटर पे हुई है, let me tell you very frankly. तो he will tell us, he is the right person, I should say, who will tell us the good as well as the bad story behind this injections कि जो इतने मास स्केल में वायरल हुए। तो लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट स्पीकर फॉर टुडे. Our speaker is Dr. Dhananjay Bakhle. Welcome, sir. Yes, Nice to thank have you here. सभी को बता दूं, he is MBBS and he is MD, clinical pharmacologist by training, और ये former executive vice president medical research in Lupin Limited, that is pharmaceutical company का नाम है Lupin Pharma. इनके एक्स वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं. He has worked for many big pharma companies in India as medical and regulatory director and headed global clinical trials for Lupin for last 14 years before retiring few months back. तो सर अभी फिलहाल ही रिटायर हो चुके हैं, इसलिए शायद वो आज हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात भी कर सकेंगे, frankly. He has academic interest at heart and served on various committees of the government and as well as industry associations for their TB technical group. He has been profiled in a book by Tata McGraw-Hill, that is Thought Leaders amongst 22 corporate leaders from different sectors of industry. So अभी आपको इतना सब मैंने बैकग्राउंड दिया है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आज की चर्चा कितनी इंपॉर्टेंट है. सो वेलकम सर. And let's begin with our session. You must have heard my introduction. So आपके मुंह से ये सुनना सब I think ज्यादा
मायने रखता है कि what I said is true or not. So you can just begin with our topic selection for today, that is gene inside and intel outside. Yes, please, sir. That's thank you, Dr. Gayatri. At the outset, I want to wish everybody good health, all your viewers, and thanks for inviting me here. And I think Dr. Gayatri has been talking to me quite a few months back. I was waiting for the right opportunity, and now that I'm free Yes. from any employment, I decided to come on the show. But of course, I've been quite vocal on Twitter in the past, which is now X and much more freer platform. I was banned by Twitter in its original version almost twice for posting, truth basically. Mhm. So I think now that it has become X, it's much easier to communicate, and I think we सर try एक to. रिक्वेस्ट है, सिर्फ आज अपना अगर वीडियो बंद नहीं करना है, चैनल को किसी बंद नहीं करना है, तो हम एक वर्ड का इस्तेमाल करके बाकी कुछ भी वर्ड्स यूज करेंगे, सो दैट आज Sure. का अपना सेशन सब लोगों तक पहुंचे. Sure, absolutely. So in fact, I've watched. There is a Dr. Campbell. John Campbell is quite famous, and he Yes. followed the YouTube guidelines so strictly, but at the same time communicated, what he needed to, the science part of it, and let me follow his path. But coming to the topic, that I think you have really chosen a very good topic, because I think a majority forget the lay people. And at the outset again, I want to say that हिंदी बहुत अच्छी नहीं है मुझे, बट तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा. Yes. बट ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें जस्ट कॉमन लोग ही नहीं, सिर्फ डॉक्टर्स, बिकॉज मैं काफ़ी डॉक्टर्स से संवाद करते रहता हूँ, एंड उसमें काफ़ी सारे एमिनेंट डॉक्टर्स है. एटलीस्ट 2 डॉक्टर उसमें कोविड टास्क फोर्स में भी थे, महाराष्ट्र के. सो ऐसे लोगों से भी बात करके मुझे ये पता चला कि उनको ये इंजेक्शंस के अंदर क्या है वो पता नहीं था. जब शुरू में जो अर्ली ट्रीटमेंट लोग दे रहे थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन के जरिए, तो उसके बारे में भी गलतफहमियां थी. एंड इससे मुझे पता चला कि ये टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए. And therefore, we can have gene inside, but we should also have intelligence inside our brains, Right. and that is True. the whole purpose of this session. So thanks for inviting on this topic. राइट. सो सर मेरा पहला सवाल तो यही है कि एज अ साइंटिस्ट एंड एज अ डॉक्टर, आपने ये जब पैंडेमिक हिट हुआ इंडिया को, तो व्हाट हाउ यू डेल्ट विद इट? आई थिंक दिस ये कंडीशन तो इतना नया था कि किसी को कुछ भी पता नहीं था. और उसके पहले भी सार्स नाम का जो वायरस है, जो वर्जन 1 में आया था, तो उसके बारे में थोड़ा पता था, लेकिन उसमें तभी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था. और इसके लिए मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज टेकन बाय अ टोटल सरप्राइज. एंड इनिशियली पहले 2 महीने तो वो पूरा सप्रेस हो चुका था, चाइना ने कुछ बताया नहीं था. आई थिंक एवरीबडी नोज दैट स्टोरी. बट व्हेन ही स्टार्टेड हिटिंग इंडिया with a lockdown, that I think all of us, particularly we had the advantage as compared to other doctors, to be in the field of R&D and science. So we understood about medicines from inside, the mechanisms and the R&D part, which the practicing doctors are not aware. So therefore, that was an advantage. We looked at which are the medicines that are likely to work. And there was some research coming from Australia. वहाँ पे एक मोनाश यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया और उसमें लिखा कि आइवरमेक्टिन काम कर सकता है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम कर सकता है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे फ्रांस में काफ़ी रिसर्च हुआ, और वहाँ के जो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है डॉक्टर राउल्ट, सो ही प्रोफेसर है वो, और उन्होंने 100 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी की है. तो उसके लिए ही इज अ वेरी रेप्यूटेड वन. ही आल्सो रन्स अ हॉस्पिटल देयर. सो ही स्टार्टेड यूजिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन. एंड यूएस में, न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर थे, वो अब बच चुके हैं, तो डॉक्टर जेलेंको करके, तो उन्होंने यूज करना शुरू किया. उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को बताया इसके बारे में, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में.
और काफी सारा डेटा था, क्योंकि कोरोना वायरस पे भी 2005 में उसके ऊपर डेटा आया था कि इट कैन वर्क अगेंस्ट दैट. And then in India, a lot of doctors started using. There are so many other countries like Brazil, clinical trials were conducted. पेरू में यूज होना शुरू हुआ, अफ्रीका में उसकी यूज शुरू हुई, and people started getting a lot of benefit arising out of patients. So मेरे खुद के कंपनी में 15,000 एम्प्लॉइज थे, तो हमने सब लोग लॉकडाउन में थे, लेकिन हमारी काफी फैसिलिटीज काम कर रही थी बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग चालू रखा था सरकार ने. तो उसके लिए सभी हमारे हजारों जो वर्कर्स है वो सब काम पे आते थे, अलग अलग फैक्ट्रीज में 8-10 जगह पे हमारे R&D सेंटर चल रहे थे. तो हमने एक हॉटलाइन शुरू की कि जैसे किसी को इन्फेक्शन हो वो हॉटलाइन पे कॉल करता था, और मेरे ग्रुप में जो कोई 20 डॉक्टर्स थे अलग अलग जगह पे, तो उनको सबको साथ में इकट्ठा करके हमने ये ट्रीटमेंट कोर्सेज बनाए, और कौन से टाइप के पेशेंट के लिए कौन से ट्रीटमेंट देना चाहिए वो हमने शुरू किया. क्योंकि बाहर से क्या बोल रहे थे लोग, वेस्टर्न कंट्रीज में से, कि इसको ट्रीट मत करो, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, आप सीधा रुको, और जब पेशेंट हाइपोक्सिया मतलब उसका ऑक्सीजन कम होने लगे, लिप्स ब्लू होने लगे, तभी आप इमरजेंसी में दिखाइए. ये तो अमेरिका में 911 पे जब कोई कॉल करता था तो वैसे होता था, लेकिन इंडिया में सभी डॉक्टर्स आगे बढ़ के उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया. सो ये दोनों ड्रग्स से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने लगे, हम पेशेंट्स को फॉलो कर रहे थे. इस तरीके से काफ़ी सारे डॉक्टर्स यूज़ करने लगे थे. लेकिन क्या हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज में सडनली थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग, and they started developing negative opinions about both the drugs, hydroxychloroquine to begin with. And वहाँ पे 2 जर्नल्स में निगेटिव पेपर्स पब्लिश हुए, and Lancet is considered the gospel of medicine, which is considered बहुत ऊंची तरह का जर्नल है वो, मेडिकल जर्नल जिसमें रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं. तो लैंसेट ने एक पेपर पब्लिश किया और उसमें ऐसा लिखा कि हमने 96,000 पेशेंट्स पे 600 हॉस्पिटल में ये डेटा इकट्ठा किया है, और उसमें ऐसा निकला है कि ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सेफ नहीं है. और वो होने के बाद फिर WHO ने उसको बैन किया. लेकिन 200 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स आगे आए और उन्होंने बताया कि ये सब गलत है. उन्होंने डेटा पूरा स्क्रूटिनाइज किया, क्योंकि वो टाइम पे तो 600 हॉस्पिटल तो यूज ही नहीं करते थे, तो वो डेटा देख के समझ रहा था उसमें कुछ गड़बड़ है. बट नोबडी कुड थिंक कि a prestigious journal like Lancet can publish a fraudulent paper. तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया, उस पे काफी सारे पेपर्स पे आने लगा, एंड देन इवन देन 15 दिन लैंसेट ने वो पेपर विड्रॉ नहीं किया. लेकिन वो 4 जो ऑथर्स थे वो पेपर के, उसमें से 3 ऑथर ने उसको लिख दिया लैंसेट ने कि बहुत हो गया, अभी आप ये विड्रॉ करो, और उसके बाद वो पेपर विड्रॉ हुआ. बट देन फिर भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाज बैंड, एंड in western countries it was not used. India continued to use it. सर मैं यहाँ पे आई विल जस्ट इंटरफियर वन पॉइंट कि आपने जब ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मी एज अ डॉक्टर एंड मी एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर, हम लोग आयुर्वेदाचार्यस, नेचुरोपैथ्स, होम्योपैथ्स, अलग अलग जो मेडिकल सिस्टम्स के डॉक्टर्स हैं, सो हमारे लिए भी सिचुएशन वाज नॉट वेरी डिफरेंट, बिकॉज everything started very haphazardly during those days. और जो पेशेंट्स हमारे पास आते थे हरदम, वही पेशेंट्स उन दिनों में सेम पिक्चर लेके, डिजीज पिक्चर लेके आ रहे थे. तो वी वर जस्ट ट्रीटिंग देम एज जस्ट अ यूज लाइक अ रूटीन, एंड वी फेल्ट दैट इट इज क्वाइट वायरल नेचर दिख रहा था हमको. वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट दैट मच डिफरेंस which was being portrayed in social media as well as जो WHO से आ रहा था. तो मेरा आपसे सवाल यह है कि हम लोगों को तो बिल्कुल प्रोहिबिट किया था तभी केसेस लेने से, फॉर नोन रीजंस टू देम ओनली. तो मेरा आपसे यही पूछना है कि ये जो ट्रीटमेंट आप बात कर रहे हैं, तो व्हेन यू फेल्ट कि नहीं, ये जो बता रहे हैं दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड आई एम थिंकिंग ऑन अ रॉन्ग साइड ऑफ द मेन स्ट्रीम, ये कभी आपको लगा कि ओके दिस इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, और ये ट्रीटमेंट मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी हो सकती थी, लेकिन ये लोग अलग ही इसको
नजरिया दे रहे हैं. तो व्हाट यू विल टॉक अबाउट दिस? आपने जो मेडिसिन अभी हाइड्रो ये जो बोले, तो व्हाट जेनेर दे कम फ्रॉम? आर दीज एंटीवायरल्स और व्हाट, लाइक व्हाट दे कम अंडर? Hydroxychloroquine is anti-malarial drug. It has been used Okay. for almost 60-65 years without any problem. It is also used Okay. in some of the arthritic conditions also, अच्छा. rheumatoid arthritis, for example. And आपने जो कहा इसके बारे में, आयुर्वेदा होम्योपैथी के बारे में, ये जो क्लोरोक्विन है वो अल्टीमेटली सिंकोना प्लांट से ही आता है. क्विनिन जो है वो सिंकोना Okay. प्लांट से आता है. So it's a modified from the plant Yes. extracts. So therefore, the origin of this drug is that ivermectin is another drug which was primarily used for parasitic infections like river blindness in Africa. और ये तो ivermectin तो ड्रग ऐसा है कि जिसको billions of doses have been given free by the company which was manufacturing it, in Africa. So 60 साल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सडनली नाउ दीज पीपल स्टार्टेड गिविंग अलर्ट्स कि ये दोनों ड्रग टॉक्सिक है, और तभी मन में शंका फैलाना चालू हो गया कि ये क्या हो रहा है, कि why they are saying that. What was the basis of using these particular drugs? यानी मेरा सवाल यही है कि हम लोगों में, हमारे रेपर्टरी एंड फार्मेसी में तो हम लोग एंटीवायरल करके ही ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच से वी चूज्ड मेडिसिन्स, बट आप ये जो मेडिसिन्स बोल रहे हैं, सो व्हाट, बिकॉज इट वाज totally different disease picture, so it was like you can say trial and error that was happening, or you really had some basis for what you were prescribing these particular drugs? No, there was a basis. So for Okay. example, as I mentioned that this Australian university published a paper. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सार्स कोरोना वायरस 2 एक पेट्री डिश में लेके सेल्स के ऊपर इन्फेक्ट करके उन्होंने उसको ड्रग्स को एक्सपोज करके दिखाया कि ये ड्रग्स काम करते हैं. So वो हुआ था, और बाद में क्लिनिकल डेटा also started coming. See, when you use in clinical patients, when patient is actually suffering and the one group of patient who is given both the drugs does not get admitted to the hospital, that becomes a greatest proof. So therefore, lots of, almost hundreds of trials started coming in on both the drugs when they showed good results. And despite that, when these international agencies started saying कि इसको use नहीं करना चाहिए, or the reasons that they were giving were very very funny. For example, hydroxychloroquine उन्होंने बताया कि नहीं ये कैसे काम करता है हमें पता नहीं है, तो उसके लिए यूज मत करो. Now most of the drugs which are used in the beginning, we don't know the mechanism. It is come to know later after more studies are conducted. And ivermectin के तो 20 mechanisms were already described. So despite that, when the agencies said that इसको use नहीं करना चाहिए, और then gradually Indian doctors, particularly in the private sector, started following them. And then it became a problem. आप जो पूछ रही थी कि आपको कभी पता चला कि you are swimming against the tide, swimming against the tide at the wrong side. आप wrong side drive कर रहे हैं, जब आगे से जब गाड़ी आती है तब पता चलता है कि ये हम सही रास्ते पे नहीं है. लेकिन in this case, this road was actually the right one. So therefore, it became very difficult to convince the people, convince the patient. A lot of questions were being asked, particularly when another doctor was being consulted by the patient. Then ultimately we had to give a choice, and then eventually we started giving ivermectin much more than hydroxychloroquine, क्योंकि hydroxychloroquine को ज़्यादा उन्होंने blame किया था. But then ivermectin was used in Uttar Pradesh, and just compare the example of Uttar Pradesh with United States, where you can comparatively have the population. If US is say around 300 million, and Uttar Pradesh is about 250 million. So I remember in the month of August 2021, because Uttar Pradesh had used ivermectin on a large scale almost 6 months before that, in that month particularly, there were only 19 new cases reported in Uttar Pradesh, whereas in the United States, there were 160,000 cases, 160,000 cases. The number of deaths in US for the same period were more than 1,000, whereas UP had lost only one patient. So this was a stark contrast, and the example of Uttar Pradesh was being given in Western countries. A lot of doctors started quoting that. So this showed that India was on the right path, and I must applaud the Indian government that they never banned both the drugs, just like it was done in several other countries. So Indian doctors could continue using it.
and those who did not use it, of course, some of them had bad outcomes, and patients were getting admitted. But I think if this drug was used systematically by the private sector also, then I feel that the number of deaths in India also would have been much lesser. राइट सो सर, हम जब ये ऐसी बात करते हैं ना अबाउट द वायरस और अबाउट द कोविड पैंडेमिक, तो आजकल बहुत आजकल ही नहीं, पहले से ही हम लोगों को मालूम है, वी आर ऑलवेज लेबल्ड एज कंस्पायरेसी थियोरिस्ट या एंटी वैक्स लॉबी. सो ये जो है, तो ये लाइक यू आर टेलिंग दैट हाउ यू स्वम अगेंस्ट द टाइड. तो आपने बैकलैश कुछ एक्सपीरियंस किया, लाइक फ्रॉम मेडिकल फ्रेटर्निटी या फिर हेल्थ केयर हो या फार्मा कम्युनिटी हो, आपका क्या एक्सपीरियंस था इस रिलेटेड व्हेन यू वर टॉकिंग अगेंस्ट द मेनस्ट्रीम नैरेटिव? Sure. No, in fact, one of my friends, is a very famous respiratory physician practicing in Mumbai, and along with another professor from Harvard, he wrote an article in a leading publication against the products that I'm talking about. And I realized that because I know him for many years and he is very evidence based, so I realized that he doesn't have access to all the data, and he's going on a different track. So I tried to contact him, but I found it very difficult to communicate. He was not willing to look at the data. So then I had to write an article in a in an Indian publication, and also a Canadian publication, Canadian portal. I wrote an article and I countered number of other studies that were blaming these products. So I think from my angle, whatever possible, I tried to do, trying to highlight the importance, simply because we were still in the Delta wave at that time. And it was very important that adoption of these products would have saved more and more patients. So despite being in pharma, despite having all the other types of pressures, I still went ahead and published 2-3 articles. And at least I remember that one of the articles was published from the West, which had some manipulated data. And this was published in a leading journal. And the institutes, there were 2 Canadian institutes, one institute in the US, who were the authors. So I even contacted the authors. I raised a lot of questions which they refused to answer. And then I published this article countering that, and nobody, in fact, challenged that whatever points I had raised about the data. Because, clinical trials is a field that we understand the best as compared to the practicing doctors, because in pharma industry, to bring any product to the market, we have to do extensive clinical trials, and we are one of the most regulated industries as compared to all other industries. And the way the regulators, both in India and abroad, scrutinize our data with a microscope, literally, we were seeing all that. And suddenly for certain products and certain injections, we saw that for one set of products which they didn't want, they tried to restrict it. On the other set of products, they relaxed to such an extent that we started getting gene therapy injections for normal people. So that was something which was very, very strange to us. Right. So जैसे आप बोल रहे हैं, हम लोग, we know that term that is prevention is better than cure, हम हरदम बोलते हैं. तो तभी prevention पे ही सब, everyone's eyes was only on prevention and nothing was talked about treatment. जैसे आपने बोला कि there were many doctors who were talking about treatment as well. तो ये treatment of COVID patients जो थी, तो उसमें आपको क्या fault line लगी उस time? What you felt went wrong? Yeah. So I think everybody was waiting for these preventive injections because they were announced by major governments, and particularly in the US. So everybody was looking forward to that. And, as COVID researchers, because we all had become COVID researchers, having access to a big research center at our disposal, also being a doctor and treating patients at that time, at that point of company employees. But, we started looking very expectedly to these particular products. And, I remember having seen टेस्टिमनी. वहां पे एक प्रोफेसर होटेस करके है, वो काफी फेमस है इस फील्ड में. वो उनको जो वैक्सीनोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो उन्होंने काफी सारा रिसर्च किया है, काफी
सालों से, दशकों से रादर। तो उन्होंने यूएस कांग्रेस को एक टेस्टिमनी दी थी और उन्होंने तभी बताया था कि ये जो सार्स CoV-1 जब आया था, तब काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे और प्रिवेंटिव इंजेक्शंस के बारे में भी काफ़ी रिसर्च हुआ था। बट तभी उनको ऐसे पता चला था कि ये बाकी वायरस जैसा नहीं है और इसमें उसका जो स्पाइक बोलते हैं, वो स्पाइक यूज़ करे, पूरा स्पाइक। मतलब आप समझ लो कि जैसे मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी पूरी यूज़ करना इज़ लाइक यूजिंग अ एंटायर स्पाइक प्रोटीन फॉर द वैक्सीन। और उसमें मधुमक्खी जो काटती है, वो जो पार्ट है वो उसकी जो स्टिंग बोलते हैं, तो वो स्टिंग छोटा पार्ट होता है जिससे वो आपको काटती है। तो वो स्टिंग निकाल के उसकी भी बना सकते हैं वैक्सीन, और जिसको हम लोग R&D में बोलते हैं RBDs, व्हिच आर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन्स। तो वो स्पाइक प्रोटीन पे जो ओके, रिसेप्टर हम बाइंडिंग लोग डोमेन वर्ड होते हैं, थोड़ा कम यूज करेंगे सर, जस्ट विल यूज द नहीं, लेकिन उसमें डिफरेंट प्रोफेसर टर्म्स। होटेस ने बताया था कि वैसे वैक्सीन बनाना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म पुराना है जिसके ऊपर 50 से ज़्यादा वैक्सीन है। लेकिन वो छोड़ के जब उन्होंने जीन थेरेपी की वैक्सीन बनाना तय किया और वो डेवलप करना शुरू किया, तब मुझे थोड़ा ऑड लगा कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसकी ज़रूरत नहीं थी। और उसके बारे में फिर ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा। उसके राइट, ट्रायल्स जो हो रहे थे उस पे देखना पड़ा, तो तभी पता चला कि ये सब सही नहीं हो रहा है। तो ये जो है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंस हम लोग दे रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी हुई है। तो इफ वी सी द करंट सिचुएशन, सर आई जस्ट लाइक टू आस्क मीनाक्षी, कैन यू जस्ट स्क्रॉल द सेवरल न्यूज क्लिपिंग्स। तो यहाँ पे मैं वो वर्ड नहीं यूज करूंगी, आप पढ़ सकते हैं। वाई द रोल आउट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सर्वाइकल कैंसर जैब is a landmark achievement. So this is booty regarding cervical, okay, cancer. Next is टीबी टीका, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगेगा टीबी से बचाव का टीका। केंद्र सरकार से एमपी को मिली 95 लाख डोजेस। तो नेक्स्ट इज ओवेरियन कैंसर जैब सेट टू ज्वाइन यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम विद इन 6 months. नेक्स्ट, और ये सीरम इंस्टीट्यूट, अभी फिलहाल की न्यूज है दैट सीरम इंस्टीट्यूट हैज जॉइंड CEPI. तो CEPI एक्चुअली इज कोalition ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस नेटवर्क फॉर वैक्सीन्स अगेंस्ट अननोन पैथोजेंस। तो ये डिजीज एक्स जो आजकल बहुत चर्चे में है, कि मालूम भी नहीं है कि ये क्या है डिजीज एक्स, लेकिन उसके लिए अभी से ही बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज तैयारी कर रही है। उसमें से लीडिंग वन इज द सीरम इंस्टीट्यूट। तो यस, थैंक्स मीनाक्षी। तो सर ये जो न्यूज क्लिपिंग्स अभी आपने देखी, सो वी आर, इफ यू सी, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट जैब्स, इंजेक्शंस, बूटी, रिगार्डिंग एज अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर एनी डिजीज। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इतने सालों से हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते थे कि चिकित्सा क्या की जा सकती है, बट नाउ थिंग्स हैव completely changed and we are just talking about these booties. So do you really think that our medical fraternity is going in a right direction regarding this? सी इसमें क्या है कि बेसिकली मोस्ट ऑफ दी जो प्रिवेंटिव इंजेक्शन जो है वो काम के होते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बच्चे लोग को भी काफ़ी सारे देते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन जब भी एडल्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, पर्टिकुलरली उसमें 2 चीज़ देखना ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या है एग्ज़ैक्टली। वो कौन से सी ये सब चीज़ कॉमन आदमी को समझना मुश्किल है, लेकिन देयर आर एक्सपर्ट्स ऑन दैट। Government has to improve the dialogue between the scientists and the doctors on one side, and secondly doctors and the common people on the other side, because ये जैसी नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी उसमें उसके जो फायदे भी मिलेंगे, लेकिन उसके साथ उसके जो दोष है वो भी पता होना चाहिए लोगों को। और उसमें हम बेनिफिट रिस्क रेशो बोलते हैं। जैसे कि आप ये जो सेम जीन थेरेपी जो है वो कैंसर के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि कैंसर में ऐसे कुछ कैंसर है कि जिसमें पेशेंट कुछ साल के अंदर मर जाते हैं। तो उसके लिए
जीन थेरेपी कैन रियली वर्क एक्सट्रीमली वेल। एंड आज आपने पढ़ा होगा कि ऐसे पहला पेशेंट एक ट्रीट हुआ है कार टी जिसको बोलते हैं, तो ये आईआईटी मुंबई और टाटा कैंसर हॉस्पिटल ने मिलके जो एक कार टी का जो जीन थेरेपी बनाया था, जिसको 3 साल के बाद ट्रायल्स करके जिसको अप्रूवल मिला अच्छी तरह से। और वो पहला पेशेंट डॉक्टर वीके गुप्ता, ही इज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, ही वाज ट्रीटेड एंड डिक्लेयर्ड कैंसर फ्री आफ्टर द दिस पर्टिकुलर थेरेपी। सो ये सब चीज के लिए बहुत अच्छी है, बिकॉज उसका बेनिफिट रिस्क रेशियो जो है वो अच्छा होता है। अभी वो सेम चीज आप नॉर्मल लोगों को देखिए तो वहां पे द बेनिफिट मे फॉल लेसर देन द रिस्क, because there is a risk to anything that you use, particularly the injections. So therefore ये benefit risk ratio जो है वो अच्छी तरह से डॉक्टर्स को पता चलना चाहिए और फिर पेशेंट्स को। और अभी वैक्सीन तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों के लिए, तो ये प्रिवेंटिव इंजेक्शन नॉर्मल एडल्ट्स को दिए जाते हैं अभी, जैसे कि अभी ये नया जो आपने दिखाया न्यूज़ हो, तो उसके लिए ये चर्चा इसमें होनी जरूरत है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसके फायदे और रिस्क क्या है, सभी चीज पता होना चाहिए। सर आपने अभी जीन थेरेपी का जिक्र किया, तो लेट्स लिटिल बिट डिस्कस अबाउट दैट। अभी मुझे कल परसों ही किसी ने फॉरवर्ड किया एक आर्टिकल, द बुक, इट इज अ बुक आई गेस, हाउ लाइफ वर्क्स, इट इज अ यूजर्स गाइड टू न्यू बायोलॉजी, okay, it is by Philip Ball somebody, Pan Macmillan, I'm not sure about the name, but this book talks about कि उनका कहना यही है कि genetics alone cannot help us to understand and treat many or all diseases that cause biggest healthcare burdens, cancer हो या cardiovascular diseases हो etc. Despite having genetic components, they are caused by cellular processes going awry. So physiology also plays a role, environmental factors do play a role. So holistic processes are very important, they are saying, to find the actual cure. तो जैसे हम लोग डार्विन्स थियोरी ऑफ एवोल्यूशन या सेल्फिश जीन जो बुक था, तो मुझे वही याद आया। तो उसमें उनका कहना है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है लाइफ, व्हेन वी गो टुवर्ड्स द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ लाइफ, कि वेयर लाइफ कम्स फ्रॉम. So why we are stuck onto that same thing about gene and tempering the gene part of it. तो उनका कहना है कि हम भले ही कितना भी जीन को सीक्वेंसिंग को मॉडिफाई करें, so every now and then new things will come up and it will be very difficult to cope to the new changes coming around us. So it is better that we try to forget the older part of it and start thinking on the holistic approach. तो आपका इसके ऊपर what is your view regarding this researcher or scientist who has written this book, How Life Works? What you will comment on this? मैंने आपने कहा वो सही है, as far as remaining healthy is concerned, for the healthy population to remain healthy, all the holistic factors are extremely important, because ये अभी पता चल रहा, साइंस को भी पता चला है कि एनवायरनमेंट का और आपके जो विसिनिटी में आपके डेली लाइफस्टाइल, इसका भी हमारी जीन पे असर होते रहता है। बट यू टेक द डिसीजेस लाइक कैंसर which occurs in, see, cancer cells keep getting formed in many people, but most of us have the ability कि वो जो immune system है वो कैंसर को भी खत्म कर देती है अंदर के अंदर, हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन those unfortunate few who get the cancer because their immune system is not able to curb the cancer cells, and when the cancer forms, then there has to be something to treat. And आज का जो current therapy है वो chemotherapy is very very toxic. Everybody knows about that, but उसमें जीन थेरेपी का काफी सारा रोल है। और आज का जो मैंने केस बताया वो कार टी, उसमें टी सेल्स पेशेंट के, मतलब वाइट ब्लड सेल्स जो है वो निकाल के उसको लेबोरेटरी में प्रोसेस करते हैं, उसमें एक जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि जिसके जरिए वो वापस ब्लड में डाल के नॉर्मल जो सेल्स है जो वीक हुए हैं कैंसर के पेशेंट के, तो वो कमांडो जैसे बन जाते हैं एंड वो कैंसर सेल को खत्म कर देते हैं। दूसरा एक, there are so many conditions for inherited diseases where some gene is missing. You must have heard of a condition called spinal muscular atrophy. कभी-कभी पेपर में आता है कि किसी बच्चे को था और ऐसे बच्चे 2 साल के अंदर मर जाते हैं।
तो किसी ने ट्रीटमेंट लिया स्विट्जरलैंड से, वो जो नोवार्टिस कंपनी ने जोलजेंस्मा करके प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो कुछ 12-14 करोड़ उसका होता है कॉस्ट उसकी। बट एक इंजेक्शन में वो जीन करेक्ट होता है, क्योंकि वो जीन करेक्शन कर सकते हैं उसके थ्रू। तो दीज आर सम ऑफ द मिराक्युलस ट्रीटमेंट्स दैट आर पॉसिबल विद जीन थेरेपी। And now a new drug that is coming is for cholesterol, but which is a genetic correction. So therefore, increasingly pharma to introduce so many products which are gene therapies, which are going to have a tremendous application for diseases of the masses also, like cholesterol, for example. And this product is going to come to India very soon. या सर, लेकिन मैं इंटरप्ट यहाँ पे एक चीज पे करूंगी कि हम जब दिस गुड साइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए इस मुद्दे पे। आई फील कि अब अगर यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, सो यू विल रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग कि आपके भी पेरेंट्स के जो जमाना था, तभी अगर देखा तो ये जो सब डिजीजेस थे बिल्कुल कम थे। कैंसर हो या इवन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो, कोलेस्ट्रॉल एंड व्हाट नॉट। सो इतना मेडिकल एडवांसमेंट होने के बावजूद एक एरा ऐसा आया कि हम बोलने लगे कि यस, कीमोथेरेपी इज बेस्ट एंड इट इज जस्ट अ लाइफ सेवर। ओके, आज हम इस स्थिति में है कि आज बहुत से डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वी नो द कीमोथेरेपी के टॉक्सिक इफेक्ट्स, isn't it? So मेरा आपसे सवाल ये है कि आज हम जैसे कीमोथेरेपी was once good, now we are trying to see the bad effects of it. तो वैसे ही अगर हम आज सोचे कि we are talking good about gene therapy, लेकिन आगे जाके it might turn out that it is really not that great, तो ये सिचुएशन को कैसे देखना चाहिए? How can we see the prognosis of any when we talk about prognosis, we talk about patient, लेकिन अभी ऐसा लगता है we should talk about the prognosis of the therapies and treatments as well. So what is your take on this? See, these medicines are just like weapons. Weapons are used for protecting yourself, killing the enemy, terrorists, for example. But at the same time, there is a shooting of innocent people also, like it keeps happening in the US. So therefore, उसका बेनिफिट रिस्क जो मैं बताता हूँ वो पता होना चाहिए, और वो जो इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है वो सबके साथ आना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए। डॉक्टर शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। कीमोथेरेपी आजकल लोग क्यों कह रहे हैं इसके बारे में कि बिकॉज देयर आर सो मेनी medicines which are called molecular targeted drugs. That means there are specific antibodies which go and hit a specific type of an antigen, cancer antigen in the patient's body, which are not as toxic as chemotherapy. So now cancer के लिए chemotherapy भी है, and then there are some of these new drugs that are available, which are being used for treatments of diseases like breast cancer, for example. Herceptin is one of the drugs that is being used. So these are not as toxic as chemotherapy, and therefore, people are now trying to distinguish, because as medicine advances, the threshold of people for accepting side effects also reduces over time, और लोगों को then safer medicines की जरूरत होती है, जैसे नए नए मेडिसिन आते रहते हैं, तो उसके लिए फिर पुराने मेडिसिन पे टीका होना तो स्वाभाविक है। राइट, सो सर एवर इवॉल्विंग चीज तो है ये, नो डाउट, but I feel we should be like you are open enough to at least talk about the other side of the coin. मुझे ये लगता है कि हर डॉक्टर ने it should be frankly talking about these other side of the coin as well. तो coming back to something important, कि हम लोग बोलते हैं कि इंडिया आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत आजकल we are using it. तो तभी भी भारत बायोटेक, as we know, कोवैक्सिन and all we did, but other part of it, Covishield was more प्रचलित हुआ, it was used, और mass scale में इसका use हुआ, तो उसमें भी बहुत त्रुटियां हमने देखी, like why many of the doctors felt कि that was not required, क्योंकि कंट्रोल ग्रुप नहीं था, या our जो एडवर्स इवेंट मैकेनिज्म है, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, वो भी ठीक से नहीं है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज एजुकेटेड इनफ एज वेल. अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन देखें
अनएजुकेटेड लोगों को तो ये मालूम भी नहीं है कि कैसे जाके हम इसको रिपोर्ट करें। सो ऐसे बहुत ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है कि जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली हेल्थ पर्सपेक्टिव से। तो ये एक हुआ। फिर कंसेंट फॉर्म्स नहीं दिए गए, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट हाउ टू डील विथ आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस एक्शन जो भी गवर्नमेंट ने लिया। तो व्हाट यू विल से अबाउट दिस? हाउ आई वुड से रादर कि जब भी हमने ये सब चीजें अपनाई इन आवर इंडिया, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशन थे एज अ डॉक्टर कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, इस पे आप रिफ्लेक्ट करिए। नहीं, आई थिंक वी हैव टू सी दिस सिचुएशन। आप जो बता रहे हैं वो सही है, लेकिन इसमें यू हैव टू कंपेयर इंडिया विद द वेस्ट। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट टेक इंडिया इन आइसोलेशन। आप सिर्फ इंडिया को देख के उस पर क्रिटिसाइज करना इज वन थिंग, बट इफ यू कंपेयर इंडिया विद द वेस्टर्न कंट्रीज as to how they were dealing with that situation, I would say India is like a saint as compared to the so many things that happen in the west. एंड अभी आप कंसेंट की बात कर रही है, तो मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज देता हूं कि 22 जनवरी को यूएस एफडीए ने एक नया रूल निकाला है जो किसी को पब्लिसाइज नहीं हुआ, और उन्होंने इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो कहते हैं, जिसके आधार पर पूरी क्लिनिकल ट्रायल इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, क्योंकि एथिक्स फॉलो करना पड़ता है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए। तो यूएस एफडीए ने एक रूल किया है कि जहाँ पे जो क्लिनिकल ट्रायल्स में रिस्क मिनिमल हो, वहां पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जरूरत नहीं है। अभी इस पे देयर आर सो मेनी ट्रीटीज, सो मेनी declaration of Helsinki is there, which governs the principles of clinical trials. And then there are Nuremberg code. Nuremberg को सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन हुए ह्यूमंस पे, उसके ऊपर एक न्यूरेमबर्ग कमीशन बैठा के उन्होंने वो न्यूरेमबर्ग कोड निकाला। तो ये दोनों कोड में क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए कंसेंट की जरूरत है। तो मैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने ये हैंडल किया एज कंपेयर टू इंडिया, हैंडल इट विद अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, a great amount of poise. They used the vaccine for diplomacy very well. So many countries are obliged to India because we supplied to them. At the same time, they did not follow the draconian rules which banned early treatment protocols. The ICMR continued to support them. The drugs were continued to be available. The mandates were not as strict as it was in the other countries. So therefore, if you look at सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैंडेट्स तो बहुत थे, प्लीज सर, बिकॉज कॉमन मैन हैड टू सफर अ लॉट। मैंडेट्स नहीं थे ऐसा नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज इफ वी गो एंड टॉक, इफ वी सिट ऑन द रोड फॉर 1 hour and talk with each member who is going across us, we will come to know the various hardships that common man went through. Not only common man, even doctors also. I know, but I'm talking comparatively. See, thousands of people and doctors lost their jobs just because they did not take the preventive injections. Think of that. If somebody carried a tablet of ivermectin at the airport, he was imprisoned. These are the cases that have happened in other countries. I mean, we have no idea. Doctors' licenses were cancelled in the US because they found to prescribe a medicine for which there are no rules. The doctor's prescription is his prerogative. So therefore, if you again compare the draconian situation abroad, I'm talking in that respect. In India, people didn't lose their jobs to the extent that only because of the mandate. So in that respect, I was saying, but I agree that we could have behaved very differently. And in fact, India, if they had such a big experience with Uttar Pradesh and ivermectin, we should have shouted from the rooftops to say that this drug is working. There are examples of other countries which stopped a drug like ivermectin, and their number of cases went 13-14 fold. So this is the case of Panama and Peru and Switzerland. Switzerland stopped using hydroxychloroquine, and their numbers tripled.
So I think India should have really guided the world. This was a great opportunity, हाँ, but simply I agree there. we didn't Yes, want to swim against the tide. At the same time, we wanted to do a Hmm. diplomacy using these injections. So with that, it was almost like a split personality that we had as a nation. True. So while we Sir, did very, not very correct word you have used today. I liked it. Split Yeah. personality used by that. That is very true. I agree. क्योंकि sir, colleges and the workforce in IT companies and all mandates were there. I'm telling you, you won't believe, because now how we are doctors, isn't it? But there is some another strata of group working in different sector altogether, occupation wise, and there were a lot of issues that happened there. So that is what No, I I've been wanted. following it. I've been following all these developments very closely, and Yes. I'm aware of some And of the what excesses. happens na sir, common man is not aware. Common man social media ने जो दिखाया ना, इतना picture करके कि this is so such a grave disease, and just people fear was so much that even if you sneeze, they used to feel that I've got COVID, and go and you do the test RT-PCR. Again, that RT-PCR was another thing. You might be aware what you Yeah, will yeah, talk about artificial, because there is always a chance of false positives as well. So I feel we never thought overall the scenario. So sometimes I agree that yes, as a government ऐसा होता है कि they have to take certain decisions. I can agree to that, but what I feel is that government should also think about द कॉमन मैन को जो डेली 24/7 तकलीफ होती है, एज अ ह्यूमन बीइंग, not just as a doctor or a researcher, I feel, but this is what happens, because finally day to day basis is what we live for and earn for. So daily bread and butter becomes very important. So yes, these clinical trials was an issue. Sir, what do you think about the clinical trials, about all these products? Were yeah. they complete, or what is your? No, I think this is very important because here again the double standards were seen. The oral treatments that I talked about, they were scrutinized with a lens saying that this trial is not good, that trial is not good. Here the mechanism is not known, so they found every possible reason to ban those oral treatments. But when it came to injections, they not only allowed very loose kind of protocols, but there is another injection which was used as an antiviral injection. I don't want to name it, but that injection was, it was a big company which conducted the phase 3 trial. And before we start the trial, we normally come out with a endpoints that हमको क्या measure करना है. तो वो ट्रायल में पर्टिकुलरली उन्होंने ट्रायल शुरू था तभी एंड पॉइंट ही चेंज कर दिए, और वो भी डेटा रेगुलेटर्स ने एक्सेप्ट किया तो प्रोडक्ट अप्रूव हुआ. यहाँ पे इंडिया में और जैसे काफ़ी सारे कंट्रीज में उसकी स्केर्सिटी भी थी. वो तो काफ़ी बिका गया काफ़ी सारी कंट्रीज में. एंड देन द प्रिवेंटिव इंजेक्शंस केम. प्रिवेंटिव इंजेक्शंस में भी जो फॉलोअप होना चाहिए था पेशेंट का क्लिनिकल ट्रायल्स में, वो सिर्फ शुरू में 1-2 महीना करके वो डेटा दिखाया. एज यू राइटली सेड इन द बिगिनिंग, इमरजेंसी यूज अप्रूवल के जरिए वो अप्रूव हो चुका, और वो स्टेटस भी चेंज नहीं किया. इमरजेंसी निकल गई लेकिन वो सेम स्टेटस पे वो अप्रूवल कंटिन्यू हुआ. और पर्टिकुलरली जब बूस्टर्स आए थे तब तो क्लिनिकल ट्रायल डेटा ही हुआ नहीं. अभी आप सीडीसी के डायरेक्टर देखो, एफडीए के कमिश्नर देखो, सब लोगों ने वो प्रमोट किया है बूस्टर्स के बारे में. अमेरिका में सब जगह पे बूस्टर्स की रिक्वायरमेंट है. लेकिन जो पहला बूस्टर एमआरएनए का जो आया था उसमें सिर्फ 10 माइस व चूहे पे एक्सपेरिमेंट करके उसका अप्रूवल दिया था. उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स बूस्टर के लिए हुए नहीं, क्योंकि यदि वो सेम इंजेक्शन है, तीसरी बार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए हमको बाकी सभी मेडिसिन के लिए ट्रायल करने पड़ते हैं कि ये दिखाना पड़ता है कि ये तीसरा इंजेक्शन भी जरूरी है, और उसके बाद ही हमको अप्रूवल मिलता है ऐसे सिचुएशन में. बट इसमें वो क्लिनिकल ट्रायल्स तो हुए ही नहीं. और अभी सबको पता है कि एक बड़े कंपनी ने तो $100 बिलियन कमाए, उनको तो कम से कम और 10 ट्रायल तो आराम से कर सकते थे, लेकिन वो ट्रायल ना कि उन्होंने किया, ना कि रेगुलेटर्स ने उसकी जरूरत की.
तो उसके लिए ये क्लिनिकल ट्रायल्स के भी जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। फॉलो कर बाकी सकते किसी हैं। भी मेडिसिन आप शायद कॉमन कोल्ड का भी मेडिसिन निकाले तो यू हैव टू गो थ्रू द सेम रूट, खुजली का मेडिसिन निकाले उसके लिए भी आपको सेम करना पड़ता है। और ये तो इतना सीरियस कंडीशन है और इसमें जीन थेरेपी टाइप प्रोडक्ट्स है तो इसके लिए काफी सारा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए था और लॉन्ग टर्म कैंसर स्टडीज करनी जरूरत होती है। उसको हम लोग I will show you here something. Meenakshi, can you just show about the moratorium clip? No, not this one. The other one. सीरम इंस्टीट्यूट का है, नॉट सीरम इंस्टीट्यूट, रिसर्चर्स का क्लिपिंग है। बहुत सारे रिसर्चर्स ने मिलके अभी एक आर्टिकल लिखा है, रिसर्च पेपर ही दिया है। डू यू हैव इट मीनाक्षी? आई हैव सेंड इट टू यू। They have asked mRNA, they have asked, in all countries कि एक मोराटोरियम पास किया जाए। Please show that, Meenakshi. I think there were 6 to 7 researchers कि जिन्होंने ये किया। I think she's trying to find it out. हाँ, exactly. Thanks. See, sir, it is written, researchers urge governments to endorse a global moratorium on mRNA injections in a newly released science paper. Okay, thanks मीनाक्षी। So इसमें उन्होंने वही बोला है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स देखे हैं कि they are trying to tell government that you should really stop this. तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें सेफ्टी इज वन थिंग, उसमें तो काफी सारा स्टडीज होना जरूरत था, लेकिन लेट इज कम बैक टू एफिकेसी एंड मैंडेट्स बिकॉज यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन कि मैंडेट इंप्लीमेंट करने के पहले कौन सी ट्रायल करना जरूरत है। जैसे कि मैं एक इंजेक्शन लेता हूँ मुझे वो इन्फेक्शन नहीं होने के लिए, तो वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन जब मैंडेट किया जाता है कि आप इंजेक्शन लो क्योंकि आप सोसाइटी के लिए प्रिवेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांसमिशन स्टडीज बोलते हैं उसको, वो करना जरूरत है। दैट मीन्स मुझे वो इंजेक्शन दे के जहां जहां मैं घूमता हूँ और किसी को वो होता है कि नहीं, वो देखना जरूरत पड़ता है कि टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर इंजेक्शन कैन प्रिवेंट ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन स्टडी तो किसने की ही नहीं थे। तो बिकॉज देयर वर नो ट्रांसमिशन स्टडीज, no country could have actually forced any mandate, if you just simply go by the medico-legal aspects of it. And there are bound to be court cases in the future, particularly when, the indemnity that has been provided by other countries is going to expire. Because as you know that India ने 2 mRNA इसको इंजेक्शंस को इंडेमनिटी नहीं दी और उसके लिए उन्होंने इंडिया में प्रवेश नहीं किया और काफी सारा उस पर राजकारण भी हुआ। सियासत भी उस पे कि क्यों नहीं, मोदी गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि इंडेमनिटी नहीं दे रहे थे, वो उनको इंडेमनिटी कैंसिल करना चाहते थे क्योंकि बाकी सिर्फ देशों में किया है, तो उसके लिए काफी देशों में तो सू भी नहीं कर सकते, केस नहीं कर सकते। तो ट्रांसमिशन स्टडीज की जरूरत होती है टू प्रिवेंट, टू गिव अ मैंडेट। अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट ओपन टू द सोसाइटी सेइंग दैट देखो इसके ये रेट्स है, इसकी एफिकेसी इतनी है, ये परसेंटेज बेसिस पे आप लेना चाहते तो ले लीजिए। तो सर कंट्रोल ग्रुप इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इजंट इट? बिकॉज अंटिल एंड अनलेस वी हैव अ ग्रुप कि जिनको ये लगी नहीं है, हाउ विल यू कंपेयर, इजंट इट? कंट्रोल ग्रुप एंड लॉन्ग टर्म फॉलोअप होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि कार्सिनोजेनेसिटी स्टडीज उन्होंने चालू कर देते थे, तो अभी 3 साल में तो पता चलता था कि कैंसर के रेट बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे उसकी वजह से। बिकॉज आप जब भी जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं तब ये तो डर होता ही है कि कभी ना कभी लॉन्ग टर्म में हो सकता है कैंसर, बिकॉज यू आर इंजेक्टिंग इवन कार्डियक इश्यूज हो, कैंसर हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, एनी mRNA के साथ जो कार्डियक इशू दे आर वेल नोन, मायोकार्डाइटिस इज वेल नोन। इंडिया इज लकी दैट or thanks to the government that we did not allow these mRNA injections here. So therefore हमारे यहाँ पे इतने कार्डाइटिस हुए नहीं है केसेस जो सडन डेथ बोलते हैं कि जिसमें नॉर्मल आदमी जिसको कोई हार्ट डिसीज नहीं कुछ नहीं है, अचानक जब सडन कार्डियक डेथ होता है, वैसे केसेस काफी सारे हंड्रेड्स ऑफ एथलीट्स में हुए हैं बाहर, लेकिन इंडिया में इतने उस प्रमाण पे ज्यादा नहीं हुए।
only because we didn't have the But mRNA. Covishield is supposed to be come from the basis of AstraZeneca only, na? So do you But that feel is not that mRNA. anything- That is not mRNA. So Your therefore, mRNA. that is a very different injection as compared to the ones that we did not get. And those injections have much more side effects. But anyway, side effects इसके लिए study की जरूरत है और वो clinical trials से ही In पता any चलता है. ways. जैसे आपने कहा control group होना चाहिए उसमें. But इसमें क्या होता? Because of mandates, the control group was getting eliminated around the world. और Exactly. conspiracy theories तो बोलते हैं कि वो control group ही उनको नहीं चाहिए था. So that apart, but at least there should have been a proper control trial, just like we do for every single medicine that we try to Right. bring to the market. Right. Sir, और I would ask you कि pharma industry का role in developing these new technologies in this field क्या है? तो आप क्या? नहीं, मैं What role? आपको sincerely बताता हूँ, not because I work for pharma, but इसमें if you wind the clock back and see the history of 3 years, you will find that there were, most of these draconian things that happened were implemented by the agencies and the governments, and pharma companies just fell in line. You'll be surprised to know, and some of you may remember that, almost like 65 to 70 million doses of hydroxychloroquine were stockpiled by the US government when it was initially known that it is likely to work. And at least so many companies who had their stocks, they had donated it free. Ivermectin was being donated initially free. So therefore, when US government started saying that these drugs should not be used, then pharma company को choice नहीं होता है. As I said, that pharma industry is completely regulated, totally regulated by the governments. So therefore, government जैसी उनको instruction देती है, उस तरीके से वो काम करते हैं. उनके डेवलपमेंट का, R&D का पूरा तरीका जो होता है वो regulations और guidelines से होता है. No other industry has such a big regulation. So therefore, I would, not blame the pharma industry behind it. Simply because if you see even the companies that brought mRNA, they were not into pharma. They were basically into gene therapy for the BioNTech, and Moderna basically is almost an outfit of spun out of NIH. So therefore, they were doing cancer chemotherapy, cancer gene therapy, not vaccines. So therefore, लेकिन I अभी तो फिर I would say कि अभी तो situation और भी बिगड़ने वाली है ऐसा लगता है, because if you must have heard about pandemic treaty जो अभी मई में it is expected, and this WHO is asking every country to sign it. तो इस पे पार्लियामेंट में भी अभी फिलहाल ही थोड़ा सा कुछ बोलना चालू हुआ है, लेकिन उसके आंसर्स जो एक्सपेक्टेड है they have not come the way it should have been. तो ये पैंडेमिक ट्रीटी के बारे में आप क्या कहेंगे? Like, don't you feel कि WHO again is trying to overpower our Indian sovereignty as such? What do you feel? No, I think they will not be able to overpower, because जैसे कि मैंने बताया कि despite their advice against HCQ and IBM, the ICMR regulations always included guidelines, always included that so many states were provided by the government. इस पे already last year parliament में discussion हो चुका है pandemic treaty पे, and from relatively unknown quarters, I saw one of the member of parliament from JDU raising this question. And I think these are the topics for the opposition to raise, because they are really lacking good topics. But I think there was no opposition only. There was no opposition right from day one. From day one. So I think this is the topic that should be raised. But I think government is not inclined to sign, is my feeling. Of course, we need to see, and everybody should resist if the government says repeat that what you're saying. Government is inclined or not? Inclined not to sign is what I think, because they have never fallen into trap actually on signing such papers. But at the same time, they try to go in a very diplomatic fashion, like I mentioned about a split personality. But at the same time, we should be very cautious, and we should not let the government sign the pandemic treaty, because that provides entire authority to the international agency, and government will have no control. And should disease X strike,
I think it will follow the same pattern as COVID, and we know exactly what has happened. We know exactly what to prevent, and many of the conspiracy theories have been found to be true, including the origin of COVID. WHO has joined hands already with Ayush. So we doctors are very much more concerned about the future, when we are talking about this. So there are many aspects. I agree. We have to be very alert, and I think that's why we need to increase the awareness. And I think doctor lobby is very, very important. I think we are really not utilize that, and your organization should really spread across among the doctors, and doctors can really sway the governments that we have seen time and again. And I think they should be aware. And once they are aware, I've seen that they do understand. Only the R&D part is something that they don't see that well, and that's where we have to be, taking that help of this. What happens now, doctor, that when such policy making or some issues happen, we grassroots level practitioners are never into picture. We directly get to know what has been decided. So sometimes it so happens कि हम लोगों को ऐसा लगता भी है कि नहीं, ये policy correct नहीं, ऐसी नहीं जानी चाहिए, या it should not have been passed, it should have some had different aspect to it. लेकिन इसके बारे में मुझे लगता है कि doctors need to come forward more and discuss all these things. तो इसीलिए मैंने ये डॉक्टर्स डायलॉग सेशंस एक्चुअली शुरू किए कि जहां पे हम नॉट ओनली द गुड एस्पेक्ट ऑफ इट, लेकिन अदर साइड ऑफ द कॉइन भी बात कर सके, क्योंकि ऑल गुड एस्पेक्ट यूजुअली इज फुल्ली कवर्ड बाय ऑल सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, लेकिन ये जो अलग बातें रहती है इस पे बहुत कम चर्चा होती है. तो सर, एट द एंड ऑफ ऑलवेज सेशन आई ऑलवेज आस्क वन थिंग कि आप मैसेज अगर किसी फार्मा साइंटिस्ट है तो एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, तो व्हाट मैसेज यू विल गिव एज अ डॉक्टर कि डेप्थ फॉर ड्रग R&D व्हेन न्यू दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, तो व्हाट मैसेज यू विल लाइक टू गिव? I think currently most of the information about medicines to the doctors comes from the pharma industry only, because once they pass from the medical course, then the subjects like pharmacology, for example, which teaches us how the medicines work, that is never taught in real life. And whenever particularly new medicines come with a completely new target, a new type of mechanism, so we have to know only from the pharma industry. So therefore I suggest that there should be more awareness of doctors about this, and those people who are taking new career, if they are medical professionals, they should pay attention much more to the the way medicines act, because ultimately once the patient is seen and diagnosed and the tests are conducted, ultimately what he prescribes is going to decide the fate of that patient and the outcome that he gets, positive or negative. And we say that one doctor is good, another doctor is not so good, but basically the differences are not from his medical knowledge. Differences is what he prescribes, because that is the weapon that they're using to fight diseases. So I think understanding these weapons much better is something that is required. And secondly, since the every 15, 20, 30 years the medicine changes completely, just like we did not have biotech medicines 30 years back, and today if you take the top 10 medicines, 8 medicines will be biotech drugs. The same thing is going to happen to the pharma industry of tomorrow, where gene therapies are going to take over, and what is called as the oligonucleotides, which are very, very small molecules, which are a borderline between gene and chemicals. Actually they are chemicals, but they are going to alter the genes, and there are at least 7-8 of them are already approved, which are not yet come to India. But that is where the revolution is going to happen. So I would suggest to the younger generation to go into areas such as genomics, gene therapy, bioinformatics, and artificial intelligence. That is one of the latest things that is coming up, that is going to revolutionize medicine and healthcare, and also pharma R&D. So, but don't you think we need to take a cautious step? Each step should be taken with a big caution, don't you think? Yeah, no, so therefore the complementary and the alternative systems of medicines are very, very important.
And particularly during COVID period, I saw that there has to be a pressure from the alternative medicine and the specialist on the modern medicine, simply because, as you rightly thought, that this is going too fast and too much in a dangerous direction. And I think we have our own ancient systems of medicine, and which basically is a way of life. And I think that is something that needs to be resurrected in terms of the minds of people. And while the modern physicians depend on drugs and medicines to treat, the alternative system and holistic medicine depends on the way of life correction. And I think that is far more important, because otherwise you can really avoid a lot of medicines if you follow that. So I think this should be working like two parallel lines, even if they don't meet ever. I think that is what is. But at least they can complement and, lock and key sometimes in certain Balance. cases. That can always happen. Sir, and what message would you like to give to policymakers? I think policymakers, in India at least, I believe they are on the right track. But at the same time, they have to be more attentive to the pharma industry, because many times we believe that they look at pharma more as a villain. Just like because of pandemic and COVID, people started perceiving pharma industry almost like as an enemy, but that is not the case. Pharma has done a great job. The overall survival, of Indians has improved dramatically with the introduction of many new medicines. So I think government has to get more serious in terms of engaging with pharma, much more on the R&D front. The R&D part of pharma needs to be improved, and I think policymakers have to be really taking a lot of interest in terms of new interventions that are coming in, and in what way they can protect the the safety of these medicines to protect the people and the patients. That is the prime goal. I think that is very important, particularly when and we did not see that happening to that extent with COVID. So I think that is the message that policymakers have to adopt: safety first. Right. So, and what about patients? One message to common public, general public. Any message? I think no, I think because of the internet explosion, I think patients are already quite well aware of what is happening. No longer information is the prerogative and held forth by the doctors. The patients are already knowing a lot about that, but then they have to use their common sense also and think whether, for example, the way people went after these preventive injections, they were standing in queues and booking in advance, and people didn't really apply their mind at what is happening here. So I think सर लेकिन सॉरी टू से वन थिंग कि हम जब ऐसा बोल रहे हैं तो एक अगर एक नजरिए से उनके फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इफ वी थिंक व्हाट कुड दे हैव डन ना, लाइक सोशल मीडिया पे, न्यूज पे अगर आप ऐसी ही बातें आ रही है कि इतना लाइफ एंड डेथ का सवाल है, सो देन पेशेंट्स साइकोलॉजी इज ओनली दैट दे विल will do everything for their survival, and that is the reason why these things happened, I feel. So somewhere मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट एंड सोशल मीडिया ने ऐसा एटलीस्ट करना चाहिए कि they should not try to what you say explode this fear amongst public very soon enough, until and unless the complete overall picture clear नहीं हो जाए. What do you think? I think, I'll tell you, as far as the patient's fear is concerned, see, anxiety is one thing and fear or apprehension is another. See, if you stand in the middle of the road, obviously there are chances that you'll be hit by a car. But if you're standing on a footpath and then you're constantly worried whether, some car is going to hit you, that is called anxiety. So if you look at the COVID situation, even after Omicron came, and it was very well known that Omicron does not even go to the lungs and infect the lungs, there is absolutely no fear of getting hypoxia or patient dying. But the amount of patients who wanted to get admitted, preventive admissions, this is something that I've never seen before in my life. That patient is all right, there is just an upper respiratory infection, and he says, I want to get admitted. So I mean, this is something that can be easily avoided. That whether I need admission, that is the first question that the patient should have asked.
So I think it is important that if you But then don't you think these positive test results were also responsible for that somewhere? क्योंकि क्यों वो जा रहे थे? उनका टेस्ट पॉजिटिव आया इसलिए they felt कि okay मुझे हो ही गया है and so I'll get admit and get treated myself, isn't it? true, but then there were patients who were looking at the CT value on the RT-PCR and saying that my CT value is so much, so I must get admitted. So I think this was very Some crazy. educated class. Exactly. So I Yes. think, see, life has got its surprises. There are conditions and diseases, it will keep coming. But I think we have to be mature enough, particularly the intellectual crowd, that they can read up. They are anyway reading up a lot, but they have to use a common sense also and not go for an anxiety. I think anxiety and fear are different things. And if we really do not become paranoid about it and obsessive, I think it's possible to prevent many of the serious effects. सर एक मैसेज मैं ये क्वेश्चन किसी को आज तक पूछा नहीं है लेकिन आज पूछूंगी कि एक मैसेज सोशल मीडिया को क्या बोलेंगे आप, मेन स्ट्रीम मीडिया? No, I think social media, particularly the Twitter, because it was much more free than other social media, has done a fantastic job. And even today, if you really want to see any topic, if you search on X, I think you will find most of the answers, much more than I would say Google and others, particularly if it is a very, very specific topic. But I think social media has its role, and we have to thank Elon Musk for keeping it free, because so many other media are getting completely corrupted. Yes, at least Otherwise, my we would have Twitter worried so much. I was not removed. So I am thankful for that. For 3 years, we were writing on Twitter, but somehow it has been still going on. So yes. And I think you should know about this trusted news initiative, which was a very dangerous precedent where many of these social media were trying to be controlled by an alliance. So I think that is something that people are not aware. But I think we have to take it with a pinch of salt. Whatever you read on the social media, you have to find out whether it's reliable or not, Exactly. and whether it is known for fake news or not. And I think most of the information is available if you have the analytical skills and mainly use common sense. I call it Occam's razor. I think if you use that, I think you cannot go wrong, whatever may be your level of knowledge. So how you felt these doctors' dialogue session? I think very interesting, and I think I'm really happy that we could communicate a very, very delicate, a very, very tricky topic, and I hope that this survives, the test. True. But I think you have got multiple media, and if not, X is always there to rescue it. And we should thank enough to QVive network, because this is the network that we are seeing that, giving us platform, and you can say where we can come ahead and speak all these things and create awareness. So Ashutosh Pathak ji is the director. Full credit. We keep hearing that again. He is always on the forefront. He has been there since the pandemic. And Awaken India movement is also doing a very good job, I feel, because grassroots level पे जाके बहुत काम करना पड़ता है. Even I'm realizing I'm part of it. I'm seeing that common public को बिल्कुल कुछ मालूम नहीं रहता है. So sometimes I feel कि educating and creating awareness amongst them is also very important. And I feel लोगों ने इस action को अलग नजर से नहीं देखना चाहिए. Like when we are discussing as doctors, isn't it? तो शायद कोई बोलेगा कि okay, this is some genuine talk happening when we are talking about the false, the negative part of it. लेकिन जब Awaken India movement की टीम बाहर जाके पब्लिक में बात करती है, so I feel this also needs to be taken positively, because they are also trying to, create awareness of the other side of the coin, so that finally a common man can decide for themselves ki, okay, this is one aspect of it, this is another aspect, and now it is my intelligence or intel that I should be using to understand what exactly gene is inside this narrative, I feel. And hence this topic that we chose, gene inside and intel outside. So this is all about it. And UHO, sir, I would like to tell you that Universal Health Organization, I am part of the management committee as well.
and recently we have formed as a registered organization in a form of a trust. तो मैं सभी दर्शकों को, व्यूअर्स को, जिन्होंने आज हमारा सेशन देखा है, and as well as to sir, I will request to go on the website uho.org.in and you will be able to find lot of articles, lot of discussions and facts जो हम लोगों ने इस वेबसाइट पे रखी हैं by all doctors across the globe. So, and sir, I would request you as well to become a part of this UHO, and please do refer other doctors as well, कि जहाँ पे और हम like minded लोग एक साथ आके, you know, we try to share our knowledge, expertise, and even talk regarding factors which are usually not talked about much. Okay. So thank you a lot, sir, that you came here and gave such precious time of yours and had a wonderful time while discussing with you about all these things. So सभी को मैं इस पे I will like to end the session and I hope कि सभी viewers को आज का session हमारा अच्छा लगेगा, और अगर आपको कुछ भी questions है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, so that maybe in next session we can just try to talk about it a little more. So thank you once again, sir, for coming on this session. And sabhi ko namaste. We'll meet you next Friday with a new doctor, with a new topic. Have a good day. Thanks a lot. भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।